हेलो स्टूडेंट्स। आज से तुम लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट होना है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इससे पहले तुम लोगों को पॉलीमर चैप्टर के बारे में बताया था। पॉलीमर कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में हमने डिटेल में स्टडी की थी। आज की क्लास में केमिस्ट्री का, जैसे कि तुम लोग जानते हो, केमिस्ट्री का मेडिसिन में और बहुत से चीज़ों में, फूड मटेरियल में, और हम जो क्लींजिंग एजेंट है इन सब में केमिकल्स का यूज़ होता है। तो आज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर से हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ ज्वाइन द क्लास। Yes. कनेक्शन प्रॉब्लम ज़रूर होगी क्लास शुरू करने से पहले, और 1-2 मिनट आराम से ले जाता है। तो बहरहाल इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कनेक्ट हो जाता है हम क्लास शुरू कर देते हैं। आज हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इस पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से केमिस्ट्री का क्या यूज़ है हमारे लिए, इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। इस बारे में हम आज इस क्लास में बताएंगे। इस चैप्टर में, चूंकि अब आज से शुरू होना है ये चैप्टर, तो पढ़ना क्या क्या है इसमें। तो स्टार्टिंग हमें करना है केमिकल्स इन मेडिसिन से। आजकल जितनी भी मेडिसिन्स हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे केमिकल्स से ही बनी होती है। तो सबसे बड़ा रोल है केमिस्ट्री का मेडिसिन केमिस्ट्री में। इसमें हमें एंटीपायरेटिक, एनाल्गेसिक, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, ट्रांसक्यूलर्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीमाइक्रोबियल, एंटासिड, एंटीहिस्टामीन, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी फर्टिलिटी ड्रग, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है। Chemistry plays important role in our daily life. Among different useful areas, one is field of medicines, which are chiefly organic compounds. In this chapter, we shall study the chemicals which are used as drug, foods, and cleansing agents. Chemistry is a big part of our everyday life. We start the day with chemistry. One can find chemistry in daily life, in the food as we eat, the air we breathe, cleaning chemicals, our emotions, literary, every object we can see or touch. Here's look at an example of everyday chemistry. Some common chemistry may be obvious, but others might surprise us. Our body is made up of chemical compounds, which are combination of elements. The emotions that you feel are as a result of chemical messengers, primarily neurotransmitters. Love, jealousy, envy, infarction, and infidelity all share a basis in chemistry. They sit, they are so harmless looking on the kitchen counter, yet as soon as we cut an onion, the tears begin to fall. What if is an onion that makes them burn our eyes? We can be sure everyday chemistry is the guilty part. Soap is a chemical that mankind has been making for every long time.
You can form a crude soap by mixing ashes and animal fat. How can sometimes so nasty actually make you cleaner? The answer has to do with the way soap interacts with oil-based grease and grime. The presentation also leads with the chemistry of coffee, drink, lactose, intolerance, smoking, and chemistry of sleep. Now we discuss chemical in medicine and discuss one by one. First medicine जो हमने लिया है तुम्हें बताने के लिए वो एंटीपायरेटिक्स. Those drugs which are used to reduce the temperature of body are called antipyretics. And reduce the temperature means fever जब हमें होता है तो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है और उस टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए यानी नॉर्मल लाने के लिए जिस मेडिसिन का हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं एंटीपायरेटिक्स. दे प्रोड्यूस स्वीटिंग which reduce the temperature. Some common antipyretics are aspirin, phenacetin, and paracetamol. This is a common drug or medicine, and aspirin is also. Structure of aspirin, acetylene, COOCH3 and COOH group बेंजीन से लगा होता है. ये क्या है? 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये कहलाता है एस्पिरिन. जो यहाँ पे एग्जाम्पल देखा. फेनासिटिन दैट इज 4-ethoxy acetaldehyde. इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, रिंग के साथ NH3 और O C2H5 अटैच है. और दूसरा है पैरासीटामॉल जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन है फीवर के में हम लेते हैं जिसको पैरासीटामॉल. उसका स्ट्रक्चर इस तरह से OH और NHCOCH3 बेंजीन रिंग के साथ इस तरह अटैच होता है. तो ये तीनों केमिकल देखा, इन केमिकल से ही एंटीपायरेटिक बनती है. नाम है 4-एसिटामाइडोफेनॉल. Paracetamol is most popular. Aspirin is also used as their sodium and calcium salt are more soluble and less harmful. Aspirin must not be taken with empty stomach. Now, aspirin is absorbed from gastrointestinal tract. The stomach acid causes a partial hydrolysis of the ester. Ester ग्रुप होता है स्पीड में जैसा स्ट्रक्चर में देखा. The ester circulates in the blood and further hydrolysis occurs into salicylic acid, which is the active component. It causes several side effects. It may cause minute ulcers in the stomach and cause bleeding. Aspirin should not be taken empty stomach. Some persons are allergic to aspirin. The usual allergic reaction is rashes on skin, lowering of blood pressure, profuse sweating, intense thirst, nausea, and vomiting. Calcium and sodium salts of aspirin are more soluble and less harmful. तो मोस्टली हम सोडियम और कैल्शियम सॉल्ट यूज़ करते हैं एस्पिरिन का. अलग से एस्पिरिन भी यूज़ होती है लेकिन इसका इस खाली पेट या स्टमक जब खाली हो तो हमने कुछ नहीं खाया हो तब इसका हम यूज़ नहीं करेंगे. Because of these shortcomings in aspirin, the other analgesic like ibuprofen, naproxen, diclofenac, sodium or potassium finds as alternative. तो इसकी अल्टरनेटिव हम जो है इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं. आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, डाइक्लोफेन, सोडियम और पोटेशियम फाइंड एज अल्टरनेटिव्स. Any sodium potassium derivatives. The derivative of para-aminophenol are used as antipyretics. The main limitation of these derivatives is that they may act on red blood cells and thus they may be harmful in moderate doses. The important derivatives are phenacetin, that is 4-ethoxy acetamide, and
Paracetamol, 4-acetamide phenol, this is derivative, and methacetin, name 4-methoxyacetamide. तो ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ पैरा एमिनो फिनॉल या आर यूज्ड एज एंटीपायरेटिक्स. Now analgesic, second type of medicine is analgesic. Medicines used for relieving pain in the body by acting on the central nervous system are called analgesics. These are of two types. First, necrotic or addictive drug. These are mainly opium alkaloids and its products such as morphine, codeine, methylmorphine, marijane, and heroin, morphine diacetate. These products, analgesia and sleep. These products cause analgesia and sleep, and in high dose cause unconsciousness, that is super coma, convulsions, and ultimately leading to death. These necrotics are also referred as to opioids because they are obtained from the opium poppy. They are very potent drug and their chronic use leads to addiction. Now the structure of morphine and codeine. This is the structure of morphine and this is the structure of codeine. These analgesics are mainly used for the relief in post post-operative pains, cardiac pains, and pain related to childbirth and terminal cancer. Now, non-necrotic or non-addictive drugs. These are the drugs which are not potent and do not cause addiction. Common drugs are aspirin, Analgin, paracetamol, Novalgine, butazolidine, that is phenyl, butazone, Brufen, chemical name is ibuprofen, and naproxen, etc. These drugs also have antipyretic properties. Now, analgesic, the structure of analgesic. This is the analgesic drug. इसका structure इस तरह से होता है. और ब्यूटाजोलिडीन या फेनिल ब्यूटाजोन, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है. ये है बीटाजोलिडीन, इसका स्ट्रक्चर. ब्यूटाजोलिडीन का स्ट्रक्चर या तो इस तरह से होगा और या दोनों का डिफरेंस देखो इस तरह से और या इस तरह से. उसके बाद ये है नेप्रोक्सेन. तो जितनी ड्रग्स का नाम लिया सबका केमिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है. आइबुप्रोफेन या ब्रूफेन जो हम कॉमनली दर्द के में इस्तेमाल करते हैं, नाप्रोक्सेन भी इस्तेमाल करते हैं. इनका स्ट्रक्चर इसमें इस तरह से दो बेंजीनियम के साथ ये ग्रुप अटैच है इधर कार्बोनिक ग्रुप. और आइबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है. उसके बाद है डाइक्लोफेन सोडियम. ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है, पेन किलर कहलाती है जो. तो ये सारी जो है ये पेन किलर दवाएं हैं जिनका स्ट्रक्चर अभी तुम लोगों ने देखा. एस्पिरिन, नवल्जीन एंड फेनाcetin act both as antipyretic as well as analgesic. They are quite effective and give immediate relief from pain. Now, non-necrotic analgesic, वही है जो अभी बताया है डिटेल में. These are not as effective analgesic as opium derivatives, but they are not habit-forming drugs. So that is why they are preferred over narcotic analgesic. Aspirin, acetyl salicylic acid or acetoxybenzoic acid in use to relieve normal pain and body strain. It is also used to prevent clotting of blood in cardio patients. It is under testing for its use in viral generated burning, AIDS, and problem during pregnancy. Its side effect is that it may cause bleeding in the wall of the stomach.
Actually, on hydrolysis, aspirin gives salicylic acid, which create problem. Other important drugs which are used are ibuprofen, diclofenac, sodium और पोटेशियम. आइबोप्रोफेन का स्ट्रक्चर देख चुके हो, ये है एस्पिरिन का स्ट्रक्चर, और ये है नारो नेप्रोक्सेन एंड दिस इज डाइक्लोफेन सोडियम. ये सारे क्या हैं? एनाल्गेसिक. नाउ एंटी मलेरियल, मलेरिया सबको पता है, इस तरह का फीवर होता है, जाड़ा दे के बुखार आता है, फीवर आता है, और ये मॉस्किटो के काटने से होता है. Medicines used in bring down the body temperature during malaria fever are called anti-malarials. Originally, quinine, that is an alkaloid, was the only drug known to be effective against malaria. Malaria is a highly widespread infection disease caused by a sporozoa genus Plasmodium. It is characterized clinically by periodic fever. इसमें जो जो कैरेक्टर होते हैं मलेरिया के: बाई पीरियडिक फीवर, एनीमिया एंड इनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन. द फोर स्पीसीज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम falciparum are responsible for malaria in human. Thus, there are four types of malaria. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है फीवर ऑन अल्टरनेट डेज आएगा. इसमें प्लाज्मोडियम मलेरी से फीवर वंस इन 3 days आएगा. प्लाज्मोडियम ओवेल से फीवर वंस इन 3 days एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपोरम से फीवर वंस इन 4 days. Choice of an anti-malaria drug depends on the point of its action on the life cycle of the malarial parasite. Various drugs used are Primaquine. It destroys sporocyte in the liver. It is too toxic and its long-term use is not advisable. Second is chloroquine, proguanil and pyrimethamine. This kills the parasite in blood. तो ये दो मेडिसिन मलेरिया की थी. Now tranquilizers and hypnotic drugs. The drugs which act on central nervous system and help in reducing anxiety and mental tension are called tranquilizers. They produce a more calm outlook without any marked degree of sedation or hypnosis, or without grossly altering the level of consciousness. They are used for the treatment of mental disease and hence are called psychotherapeutic agents, yeah, drugs. There are various types of tranquilizers and they work by different mechanisms. For example, noradrenaline is one of the several neurotransmitters that plays an important role in mood change. If the level of noradrenaline in the body is low due to certain reason, then the signal sending activity of hormone becomes slow and the person suffers from depression. In such case, the patient needs antidepressant drugs and these drugs inhibit the enzyme which catalyze the degradation of noradrenaline. The two important commonly used antidepressant drugs are ipronisib and phenylzyme, that is Nardil. स्ट्रक्चर इसका इस तरह से है, आइप्रोनाइजिड एंड फेनिलजिंक. ये दोनों एंटी डिप्रेशन ड्रग होती है. टू पावरफुल ड्रग्स कॉल्ड एरिस्पाइन एंड एल्केलाइड एंड क्लोरोप्रोमाजीन were introduced simultaneously.
simultaneously for getting relief from hypertension. The other drugs in common use are barbituric acid and its 5,5-disubstituted derivatives, barbiturates such as veronal, amytal, luminol and सेकेनल एक्सेट्रा। इन सब का ये स्ट्रक्चर है। बार बाइट्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, वेरोनॉल और बारबाइटल का स्ट्रक्चर इस तरह से है और ल्यूमिनॉल का स्ट्रक्चर इस तरह से है। डिप्रेशन में इन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। उसी तरह ये वैलियम और सेकेनल अभी जो आगे बताया था, इनका स्ट्रक्चर, केमिकली स्ट्रक्चर इनका इस तरीके से होता है। नाउ क्लोरोडाइजेफॉक्साइड, क्लोरोडाइएजिपोक्साइड and meproblamate are relatively mild tranquilizers suitable for relieving tension, equally used in controlling depression and hypertension. Another important tranquilizers are diazepam, that is Valium, कैल्पपोज एंड सेरोटोनिन। जिसका स्ट्रक्चर, सेरोटोनिन का स्ट्रक्चर ये है, इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। और तुम्हारा जो दूसरी ड्रग है इक्वेनिल, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, ये लॉन्ग चेन कार्बोनिल, अमोनी, ये सारे ग्रुप जो हैं इसमें इस तरह से अटैच है, इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। और अगला है क्लोरोडाइज इपॉक्साइड, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। सब स्ट्रक्चर बना करके, देख करके, बना के, लिख करके इसकी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद है एंटीसेप्टिक, ये भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है एंटीसेप्टिक। Those chemicals which destroy or prevent the growth of microorganisms are called antiseptic. They are used in cleaning of wounds or in treatment of skin cuts, etc. Furescin and soframycin are used as cream. Amyl metacresol, that is 5-methyl-2-pentaphenol. Antiseptic is used to remove the bad smell of mouth caused by bacteria decay. Owing to this property, it is used in deodorant, powders of breath fresheners. For example, biothionol is added as antiseptic in soaps. When the soap is used, then it reduces the bad smell produced by bacteria decomposition. Another important antiseptic is mixture of chloroxylenol, terpenol and Dettol in a suitable solvent. Now structure of chloroxylenol. This is the chloroxylenol, aromatic product है सारे. Bethionol, this is also an antiseptic. And third is terpineol and fourth, सब क्या है ये, एरोमेटिक प्रोडक्ट नहीं है, एलिफैटिक है ये, एमाइल मेटाक्रिसोल। दिस इज all these drugs are these medicines or antipyretics, that is not antipyretic, antiseptic. Iodine is a powerful antiseptic. 2 to 3% solution of iodine in alcohol and water is used as tincture. Iodoform powder is also used as antiseptic. ये सारी चीज़ें यूज़ किया होगा तुम लोगों ने, जब ज़रूरत पड़ी होगी तो। Dilute aqueous solution of boric acid, which is a weak antiseptic, is used as eye lotion. Now, disinfectants, chemical substance which kill microorganisms or stop their growth but are harmful to human tissues are called disinfectants. These substances kill the bacteria immediately. These are used for sterilization of inanimate objects like instruments,
utensil, toilets, drains, floors, sanitary fittings, sputum, and on the excreta. These are harmful to living tissues and cannot be used on the skin. The examples are phenol, methylphenol, hydrogen peroxide, chlorine, bleaching powder, sulfur dioxide, etc. The same substance can act as antiseptic or disinfectant depending upon the concentration of the substance in solution. In smaller concentration, it is an antiseptic, while in higher concentration, it becomes disinfectant. 0.2% solution of phenol acts as an antiseptic and its 1% solution is a disinfectant. So now some common examples of disinfectant, that is chlorine. First is chlorine is used to disinfect drinking water. It is used as 0.2 to 0.4 ppm part per million होता है ppm concentrated solution. Now hexachloroquine is mainly used in soaps, creams, dusting powders and emulsion. Thymol, a natural derivative of phenol, is a powerful disinfectant. उसके बाद है थाइमोल. इसका स्ट्रक्चर है थाइमोल का एमाइल पेंटाक्रीसॉल. टू chemical name is 2-methyl-2-phenyl. Phenol is used as antiseptic in mouthwash or gargles in infections of the mouth and throat. स्ट्रक्चर इसका इस तरह होता है एमाइल एम क्रीसॉल. Ethionyl is used as an antiseptic in medicated soaps. Such soaps are used to reduce undesirable odors used to bacterial action on skin surface. स्ट्रक्चर आप इथीसॉल इस तरह से दो बेंजीन रिंग यहाँ सल्फर से जुड़ी हुई हैं और साथ में ये सारे ग्रुप लगे हुए हैं. Now, Dettol is one of the most commonly used antiseptic in the world. It is a mixture of chloroxylenol and alpha-terpineol in a suitable solvent. Chloroxylenol 4-chloro-3,5-dimethylphenol is used both as an antiseptic and disinfectant. Para-chloromethoxy Linol is also used as body deodorant. ये स्ट्रक्चर है क्लोरो जाइलिनॉल का और ये अल्फा टर्पिनियोल. Gentian violet and methylene blue are organic dyes but are also used as effective antiseptic. Now come on antacids. The substance which reduce or neutralize gastric acidity and raise the pH to appropriate level in stomach are called antacids. Intestine is acidic due to the formation of HCl during digestion. Excessive acidity in the intestine creates problem of intestinal ulcer, gastric reflux, and Oesophagitis. The commonly used antacids are discussed below. First है baking soda containing sodium bicarbonate and potassium bicarbonate. Baking soda is an antacid. Magnesium oxide, magnesium hydroxide, magnesium carbonate and magnesium teresilicate and calcium carbonate, aluminum hydroxide, aluminum phosphate and aluminum amino acetate. In recent years, omeprazole and lansoprazole are also marketed as antacids as they prevent the formation of acid in the stomach. Ranitidine, that is Zantac, and cimetidine, that is Tagamet, are used in the treatment of peptic ulcer. Some other antacids, diethene, glucil, acicard, acetine, acifix,
एसिमिल, मेटाट्रेट, एल्यूसिनॉल एक्सेट्रा। रेनिटिडीन जेंटेक का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है ये। और उसके बाद दूसरा है सिमिटिडीन टैगामेट जिसको बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। फिर ये है ओमेपेराजोल, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ये सामने है तुम्हारे। उसके बाद है लेंसोपेराजोल, इसका मेडिसिन का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। Now, anesthetics. What is anesthetic? Anesthetic may be defined as those drugs which produce instability to the vital function of all types of cells, especially of nervous system. That is, affected organs return to the normal state as soon as the concentration of the anesthetic is decreased. Thus, anesthetic produce temporarily instability to pain or feeling in the whole body or a particular organ. Anesthetics may be classified into two groups on the basis of their application. Now, general anesthetics. These depress the central nervous system to such an extent that all sensitivity to pain or feeling is lost. That is, they produce unconsciousness all over the body. These are used for the major surgical operations. Chloroform, diethyl ether, vinyl ether, etc. are general anesthetic. These may be used in the form of a gas, e.g. nitrous oxide, chloropropane, ethylene ether, or may be given in the injection form. सोडियम पेंटोथॉल जो है ये इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, बाकी जो है गैसेस के रूप में दिए जाते हैं। अब है लोकल एनेस्थेटिक्स, वो तो कम्प्लीटली जो है पेन को गायब कर देते हैं, यहाँ तक कि बेहोशी तक आ जाती है, तो इससे पहले वाला पढ़ा तुमने। अब है लोकल एनेस्थेटिक्स, these affect only a part of the body to make it insensitive to pain or feeling. Common local anesthetics are Novocaine, Xylocaine used in jelly form, ethyl chloride used in spray form, and Procaine used in injection. These are used for small surgical operations like tooth extraction, stitching of a wound, or incision of an abscess. Some other modern local anesthetics are alpha-Eucaine, Orthocan, Orthoform, and Dimethoquim. Now, antioxidant. The foods which contain substances like unsaturated oils and fat undergoes deterioration on storage because of atmospheric oxygen. To prevent their spoilage, certain chemical substances are added which prevent their oxidation. These are called antioxidants, that is important and necessary food additive. These compounds retard the action of oxygen on the food and thereby help in its preservation. That antioxidants are chemical substances which prevent oxidation of fat in processed food such as potato chips, biscuits, breakfast cereals, crackers, and spoilage of the BHT, BHA, ये एंटीऑक्सीडेंट है, गैलिक एसिड, प्रोपिल गैलेट. The important antioxidant used are butylated hydroxy toluene, that is BHT यहाँ पे दिया है ये, butylated hydroxy anisole, BHA दिखाया था स्ट्रक्चर अभी, propyl gallate PG, and tertiary butyl hydroquinone, that is TBHQ. The addition of BHA to butter increases storage life from month to year. Sometimes BHT and BHA are added in combination with citric or ascorbic acid, vitamin C, to produce a more active synergetic
effect. Vitamin C and vitamin E have also been used as antioxidants. Sulfur dioxide and sodium metabisulfite, that is preservatives, are useful antioxidant for wine and beer. Sugar, syrup, dried fruits and vegetables. Now anti-fertility drugs. Anti-fertility drugs are used to control pregnancy. They are called birth control pills also. Most of them are hormones and are available only for women. Although work had been started in 1950 to get effect anti-fertility drug, but an ideal drug is still awaited. Most of the birth control pills are mixture of synthetic estrogen and progesterone. Both of them are har- hormones. Progesterone stop ovulation. Synthetic progesterone is more effective than natural. Norethindrone is a synthetic progesterone which is widely used in birth control pills. Estrogen derivatives, ethinyl estradiol, is also used in birth control pills along with progesterone. Now in the other way we can say chemical substance used to check pregnancy in women are called anti-fertility drug or birth control drugs or oral contraceptives. Oral contraceptives or pills or oral pills belong to the class of natural products known as steroid. It controls the female menstrual cycle and ovulation. A number of oral pills are available. A few popular out of these are combined pill, progestogen, only pill POP, post-coital pill, long-acting once a month pill, and male pill. These anti-fertility drugs contain chemicals related to female sex hormones, a mixture of synthetic estrogen and progesterone, which are more potent than the natural hormones. For example, a common brand name Evovit E contains norethindrone, that is progestin, and mestranol or ethinylestradiol and estrogen. Mifepristone is a synthetic steroid that blocks the effect of progesterone and is used as morning after pill in many countries. इसका स्ट्रक्चर नॉर एथिनड्रोन का स्ट्रक्चर है ये और दूसरे ड्रग है एथीनाइल स्टेरॉइड या नोवेस्ट्रॉल इसको कहते हैं और ये एंटी फर्टिलिटी अगली ड्रग है माई फेप्रिस्टोन का स्ट्रक्चर है ये आर्मिलोजिफेन दैट इज सेंट्रोमान सहेली नाम से आती है जो आर्मिलोजिफेन has also been developed and tested at CDRI Central Drug Research Institute, Lucknow, as an effective anti-fertility drug to certain extent. All such drugs are expected to have side effects and hence should be used only under medical advice. तो ये कुछ मेडिसिन के बारे में हमने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से ये इसका जो केमिकल है इनका इन मेडिसिन को बनाने में किस तरह से सारी ही केमिकल होती हैं किस तरह से बनाने में इनका रोल होता है और तो इस तरह से केमिकल इन मेडिसिन
इस बारे में बहुत सी दवाओं के बारे में देखा तुम लोगों ने। अगले क्लास में हम आगे भी मेडिसिन्स के बारे में ही अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद और दूसरी चीज़ों के बारे में।